Hi, good morning, students. How are you? Today we are going to learn the poem An Elegy on the Death of a Mad Dog, written by Oliver Goldsmith. First of all, I want to tell you about the poem. What is elegy? This poem is an elegy. So I would like to tell you what is an elegy. So an elegy is a poem which expresses sad feelings over the death of a friend or of an important person. So जैसा कि आपने देखा कि एलिजी एक ऐसी कविता होती है जो किसी की मृत्यु के पश्चात लिखी जाती है, उसके विलाप में इसे हिंदी में शोक गीत कहते हैं। तो एक ऐसा शोक गीत है जिसे किसी की मृत्यु के पश्चात लिखा जाता हो। दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी मैं कहूँगा कि एलिजी हैं, जैसे कि थॉमस ग्रे की एलिजी है, एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, बहुत अच्छी एलिजी है। उसके पश्चात लिसिडास है और भी कई सारी हैं, लेकिन किसी जानवर के बारे में लिखी गई एलिजी वास्तव में ये अपने प्रकार की एक यूनिक है। इसकी जैसी और कोई एलिजी नहीं मिलेंगी आपको अंग्रेजी साहित्य में, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक कुत्ते के ऊपर लिखी गई है। वास्तव में रियली इट इज एन हार्ट टचिंग, इट इज अ हार्ट टचिंग पोएम। सो द पोएट डिस्क्राइब्स फ्रेंडशिप बिटवीन अ मैन एंड अ डॉग. At first, they get along well, but after some time, they begin to quarrel and become enemies. The dog goes mad and bites the man. The townspeople lament that this good man, must die a rash death, betrayed by the ungrateful cur that he had trusted. Contrary to the prediction of the townspeople, the man has recovered and the dog has died. Thus, something unusual happened. The poem is a good example of satire on human behavior. The sudden reversal of situation in the end of the poem makes the satire bitter. The man believed to die recovers and the dog cursed for disease dies. The man, under the mask of innocence, proves fatal to the innocent animal. So, stanza first. Good people all of every sort, give ear unto my song, and if you find it wondrous sort, it cannot hold you long. In simple words, the poet says that all the type of the people, children, men, female, or women, everyone, give ear unto my song, means listen to me, and if you find it wondrous, if you find my song interesting, then it cannot hold you long, means it will not take long time to hear you to tell. Further, in Islington, there was a man of whom the world might say that still a godly race he ran whenever he went to pray. The next stanza, the poet says that in Islington there was a man, there lived a man of whom the world might say, means about him the people would say that still a goodly race he ran, means he was a good man. Whenever he went to pray, he goes to pray, everyone prays to him. Further, a kind and gentle heart he had to comfort friends and foes. The naked every day he clad when he put on his clothes. Okay, a kind and gentle heart he had, means he was a gentleman and his heart was very pure, or he has a kind heart. To comfort friend and foes, means to comfort friends or enemies
The naked every day he clad. He always tries to help them, to give comfort to them. Like when he put on his clothes, he gives clothes, dresses to the needy people. And in that town a dog was found. As many dogs there be, both mongrel, puppy, whelp, and hound, and curs of low degree. Means it says that in that town, which town? Islington town. In Islington town, there found a dog was found. Means one day the poet found a dog. As many dogs there be, means there were so many dogs. Among them, the poet chose one. Like there were so many kinds of dogs, like mongrel, puppy, whelp, hound, and another. But the poet chose one among them. This dog and man at first were friends, but when a BQ began, the dog to chain his private ends went mad and bit the man. Students, this dog and man at first were friends. As you know, both the man and the dog were very dear to each other. At the beginning or in the starting, they were friends. But when a BQ began, means when a quarrel took place between them, the dog to gain his private ends, means the dog was animal, but to save his rights, went mad. He, means the dog, becomes mad and beat the man. Around from all the neighboring streets, the wandering neighbors ran and swore the dog had lost his wits to bite so good man. Around from all the neighboring streets means all the neighbors ran or came to poet's house or to the narrator's house, and wandering neighbors ran. They ran and swore. They said with promise that dog had lost his wits, means this dog had gone mad, who bit so good man. Means all said that the dog was mad because he beat the gentleman. The wound, it seems, both sore and sad to every Christian eye, and while they swore the dog was mad, they swore the man would die. And all the people predicted that one day or soon the man will die with the wound. But dear students, and while they swore, they said with promise that soon the man will die. But soon a wonder came to light. A surprise took place that showed the review they lied, means all the people were false. Their prediction turned into false. The man recovered of the bite, means the beaten man recovered from his wounds. The dog it was that died. It was the dog that died. Means the man recovered, and their prediction also became false, and the man recovered from his wounds and the dog has died. तो देखिए कितनी अच्छी ये कविता है, और जिसे कि बताया गया है कि एक बहुत अच्छा सेटायर है, व्यंग है कि किस प्रकार से जो मनुष्य है वो अपने अधिकारों की खातिर बेचारे जो निर्जीव इनोसेंट हैं, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, भोले भाले बेचारे जो जानवर हैं, उनको किस तरीके से उनके अधिकारों का हनन करते हैं और उनको उनकी लाइफ से किस तरीके से खिलवाड़ करते हैं। इस कविता में बहुत अच्छा बताया गया। आपने देखा कि कवि कहता है, मैं हिंदी में एक बार आपके लिए कर दूं,
तो कवि कहता है कि यदि आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं, मैं आप लोगों को एक गाना सुनाना चाहता हूँ, और यदि मेरा गाना आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप क्या करो, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कहता है कि इस्लिंगटन नामक शहर में एक व्यक्ति रहता था, और वह जो व्यक्ति था बहुत अच्छा था, चिकन हार्टेड, दयालु था, बहुत भला इंसान था। दैट स्टिल ए गुड रेस, काइंड एंड जेंटल हार्ट। और उसका जो हृदय था वो भी बहुत काइंड, दयालु था और सभ्य था। और वह हमेशा दोस्तों को और दुश्मनों को, यानी कि सभी लोगों को सहायता करने की हमेशा कोशिश करता था। He always tried to make others' life comfort. So, a kind and gentle heart. और बच्चों एक दिन क्या होता है कि उसको एक कुत्ता मिलता है। एक दिन उसको क्या मिलता है? कुत्ता मिलता है। और कई सारे कुत्तों की प्रजातियां वहाँ पर थी, लेकिन उनमें से एक कुत्ता उनको मिलता है। और इससे कई जातियां बताई है, मोंगरेल है, पोपी है, वेल्प है। हाँ, इनमें से उसे एक कुत्ता मिलता है और उसे लेकर अपने घर पर आ जाता है। आफ्टर सम टाइम, यानी कि अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग, दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स। उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति और कुत्ता दोनों प्रारंभ में बहुत अच्छे दोस्त थे। जैसा कि होता है हमारे साथ में, बहुत अच्छे दोस्त थे। स्टार्टिंग में दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने भी कि तब उनमें एक झगड़ा हो जाता है बीच में, कुछ दिनों बाद में जाकर। और जब झगड़ा होता है तो आपने देखा कि झगड़ा अपने अधिकारों को लेकर होता है। बेचारा कुत्ता जो था, जैसे कि मैंने कहा कि वी हैव अ डॉगी और वी हैव अ पेट डॉग इन आवर हाउस। व्हेनेवर वी वांट टू लव, देन वी कॉल कम टॉमी, टॉमी कम हियर। व्हेन वी don't have interest, and we don't want to play with that, with the puppy or dog, pet dog, we say that go Tommy go. What nonsense. Like the same thing, जब दोनों की अच्छी दोस्ती रही, उनमें विवाद हुआ अपने अधिकारों को लेकर। और वह जो बेचारा कुत्ता था पागल हो जाता है, गॉन मैड, पागल हो जाता है। और पागल होने के बाद में वो उस व्यक्ति को काट लेता है, तो उस व्यक्ति को काट लेता है। अब आसपास से लोग आते हैं, आसपास से सारे लोग आते हैं और ये कहते हैं कि ये जो कुत्ता जिसने काटा है ये एक बेकार कुत्ता था, शायद पागल हो गया, जिसने इतने भले इंसान को काटने की हिम्मत की, इतने बड़े भले इंसान को काटा जिसने। और सभी लोगों ने ये प्रिडिक्ट की, ये घोषणा की, मैं कहूँ कि पूर्व घोषणा की उन्होंने कि एक दिन बहुत जल्दी ये व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन बच्चों, इस कविता में जो सैटायर है वास्तव में लास्ट में बहुत अच्छा सैटायर है कि लास्ट में हम देखते हैं कि सभी लोग जो वादे के साथ में कहते हैं, स्वेयर करते हैं, कसम खा खा कर कहते हैं कि बहुत जल्दी ये व्यक्ति मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और लास्ट में वह व्यक्ति बच जाता है, अपनी जो वाउंड घाव हुए थे उसको काटने से वो रिकवर हो जाते हैं, और यह कुत्ता होता है जो बेचारा मर जाता है। बेहतरीन कविता। इस तरीके से लोगों को मैं कहूँ कि यहाँ पर the poet locked all the people's faces. In the last stanza that the man recovered of the fight, the dog it was that night. और बच्चों यहाँ पर इस कविता में पूरी में मैं बता दूँ आपको, राइम स्कीम है लाइक शॉर्ट song long, man ran, say, pray, had, glad, for his cloth, found, how, be, degree, friends, ants, begin, man, streets, weeds, ran, man, sad, mad, I die, light, bite, light, die. तो बच्चों, मुझे आशा है, I hope you have understood this poem very well, or it would be helpful for you. Thanks for watching, and like it and share it. If you really like, I would be very glad. Or I will be a help, or I will make so many other videos if you like it. Thanks for watching. Best of luck.